Hello friends, welcome back. So today is 16th of March. We are going to take out the levels for 17th of March, that is tomorrow. Tomorrow Nifty we will be having weekly expiry also. So we will be discussing about that also where you can find a blast area. Okay. Before going ahead, we will be taking out the summary of yesterday's video also. So we marked the levels for today and how the levels worked, where it worked, and where were the trades to be found and how it was to be found. Okay. So before going ahead, read this disclaimer. See, this video is purely for educational purpose, and this these all are my personal views. You have to study yourself to understand the levels also. Okay, so let us move down to Nifty first. Nifty, we marked this area. This green box area is nothing but a gap which was found in weekly, right? Let me show you. Can you see this? We found this gap that was in weekly, so that got filled today. Black lines are my support and resistance. This is the resistance line and this is the support line. So today morning we opened little bit gap down, ideally gap down. You cannot see it as a gap down, it is flat opening, but little bit gap down than yesterday's closing, but we did not breached, we in the sense Nifty did not breached the support zone, right? That was at 23,120 levels. So we opened at 23,116. Actually it was 23,108 was the marking for yesterday. A little bit today while trading it must have got shifted, right? So we did not, Nifty did not breach the support zone. It went back again upside, but it did not cross the blue line. See, if you have seen the video yesterday, you would have been able to relate it very clearly. I said, okay, if Nifty opens above blue line, it will be buy on dips, and if it opens below blue line, it will be sell on rise, right? And in the midway, if it crosses the blue line, you have to wait for buy on dips area, right? So support, from support it moved to the blue line, but it did not cross the blue line. So from here you got a good dips, right? Sell on rise hua, but we Nifty did not closed below this box, this green box wherein the red line was also marked, that is at 22,989 levels. There was no closing of a red candle below this, so that's the reason over here you must have not found the trade, and in this sideways area trade must have not come down. But once the price breached this trend line which was marked yesterday, can you see a big momentum on the CE side, and it adhered to our resistance area. You got it? I'm breaking it down to 5 minutes, so you will be able to understand. We marked this red dotted line also. Over here it started making up a base, so ideally your trade was this one candle and complete, right? This one was the one of the trades. Another trade was this one, this downfall. These are the two trades which came today. Apart from that, all the trades were just moving on the same pricing area. Okay, so Nifty, let us mark Nifty levels for tomorrow. So you all know I start from monthly.
Monthly, the candle is still a running candle and it is below 20 EMA. Fine, the trend is down on monthly. Weekly, this is the running candle, 3 red, I'm expecting green. First it should cross this half of the red candle, then we can see a reversal has come down. Otherwise it is just technical, by 3 red and 1 green has to come, right? कहाँ ना कहाँ ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाता है. इफ 3 ग्रीन रहता था तो इट वुड हैव बीन ओवरबॉट. तो कहाँ ना कहाँ, कैन यू सी दिस, 3 ग्रीन 1 रेड, right? I have a lot of examples of that. Can you see this 3 green and a red, right? There are a lot of examples. So you have to understand, this is technical and this is try tested one. Probability is high. I'm not saying that it always works. The probability of the work is very high. So I'm breaking it down to 4 hours. 4 hours, do I have any supply zone or a demand zone? The answer is no. I have a supply zone over here, but there are gaps in it. Breaking it down to 2 hours. Okay, fine. Lots of basing candles are there. Okay, for in a 15 minutes, let me tell you, this level stays intact. It is just ये red वाला level निकल जाएगा, that's all. Other levels stay intact, little bit here and there, that's all. So tomorrow the Nifty, if Nifty opens about this blue one, that is 23,279, then it would be buy on dips. And if it opens below this, but the trend, if it does not closes below the trend line, तो ट्रेंड लाइन पे भी यू कैन हैव अ बाइंग एरिया. मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आएगा तो यू कैन टेक अप फॉर अ लॉन्ग पोजिशंस. इसके नीचे रेड आया, ऑब्वियसली यू विल बी हिटिंग द सपोर्ट जोन ऑल्सो. सो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स हैं, दैट इज 22,989 एंड 22,755. ठीक है. नाउ वेयर टू फाइंड अ हीरो जीरो और गामा ब्लास्ट कहाँ पे हो सकता है? आई लुक इन फॉर दिस ऑप्स्ट्रा में आई लुक फॉर एन ओपन इंटरेस्ट in Nifty. There is a big range in Nifty. So one is this red, that is at 23,000 and another one is at 24,000. 1000 points का range हो गया है. So 1000 points का range is not a good one. Okay, so वो live में ही फिर तुम्हें, मतलब we have to check it out on the live trading session, so that where this OI are getting moved, and on that basis only you will be able to find a hero zero trade, or I would say a gamma blast trade, right? Criteria थोड़ा fix कर लेना. hero zero में enter करने से पहले at least you should find 5 base candles in 5 minutes. I think so you all know that thing. Okay, so this is about Nifty. Levels are staying intact. We are not changing up the levels. थोड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस का थोड़ा चेंजेस है, दैट्स ऑल. 21,093 is going to be your support, and midway is 23,279, and resistance is at 23,487. If that resistance break, we can see a quick momentum towards 23,633 and 23,816. राइट, फर्स्ट ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन आया है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है. यू गॉट माई पॉइंट. सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल एज अ इंट्राडे ट्रेडर टुमारो कि लेवल्स पे आने के बाद ही, एक क्लोजिंग कैंडल होने के बाद ही ट्राई टू फाइंड अ ट्रेड. यू गॉट इट. बैंक निफ्टी सेम, it happened in the same way.
सपोर्ट पे आके बाउंस हुआ बट विद ब्लू डिड नॉट क्रॉस्ड, वापस वहाँ से डाउन साइड टिल रेड, रेड को क्रॉस करके नीचे नेक्स्ट मतलब दैट इज सपोर्ट, फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट तोड़ने का फर्स्ट टारगेट आया एंड देन स्टार्टेड बाउंसिंग बैक, ब्लू के जैसे ही क्रॉस किया वी गॉट अ गुड मूव। ठीक है, तो सेम बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत चेंजेस फॉर टुमारो, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। You got it? These are the changes, that is 54,117 हो गया मिड वे एंड 53 528 हो गया, थोड़ा बड़ा कर दूं, ओके हाँ 538 इज योर सपोर्ट, सपोर्ट तोड़ने का 53,213, कल सपोर्ट तोड़ने का चांसेस बहुत कम है। बैंक निफ्टी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ओवाई सब स्कैटर्ड ही है। सेम है विद द सेंसेक्स, सेंसेक्स के भी चार्ट्स सेम है। सेंसेक्स भी डिस्कस्ड ऑल्सो कि भाई रेड आएगा तो नेक्स्ट नीचे की तरफ देखना, यहाँ पर रेड आया नीचे तक आया, यहाँ पे ग्रीन आएगा तो आपको यू विल गेट द फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकेंड टारगेट, थर्ड एंड देन फोर्थ टारगेट। यहाँ पे ग्रीन आने के बाद, यहाँ पे ग्रीन आने के बाद कैन यू सी फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट से बराबर रिवर्सल आया। You got it? So this is why these levels are important. Levels help you to understand if a green candle is formed at that level, what I should look out for and what should be my first target. The levels are very clear to make you guide through the targets कि भाई यहाँ से चेंज कहाँ पे है, किस तरफ ट्रेड लेना है, और what are the good targets that is going to be achieved. You got it? So निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हीरो जीरो निफ्टी का जो भी है कल लाइव चार्ट पे ही समझ में आएगा, अदरवाइज नॉट। हाँ यहाँ पे आया एंड इट इज बेसिंग ओवर हियर, यू कैन लुक आउट फॉर अ कॉल साइड हीरो जीरो। यहाँ पे आने के बाद रेड क्रॉस किया, ऑब्वियसली ये दो लाइन के बीच में आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। आफ्टर दिस ब्रीचेस दैट इज 22,989 ब्रीच किया, देन डाउन साइड के लिए रेडी हो जाएगा 22,735 के लिए। यू गॉट इट? सो दोनों तरफ, सिंस द पीसीआर इज न्यूट्रल, कैन यू सी इन निफ्टी द पीसीआर इज न्यूट्रल, दैट्स द रीजन बोथ साइड के लिए रेडी रहना, टाइमिंग देखना, बेसिंग देखना, एंड देन इफ ऑल क्राइटेरिया आर गेटिंग सेट देन यू गो फॉर अ big blast trade. I hope you are able to understand. Another request to every one of you, see last video I think so more than 50 of them have watched it, but on an average you are watching only 2 to 3 minutes of the video. See when you have a 20 minutes video or a 15 minutes video, try to grab all the things, मतलब आप पूरा वीडियो देखोगे ना and consistently देखोगे, then only you will be able to understand कि भाई why these levels are important and वो levels पे आने के बाद मुझे काम कैसे करना है, right? So tomorrow 3 possibilities, flat opening, blue line के ऊपर रहेगा तो best है, नहीं है blue line के नीचे है तो sell on rise रहेगा, blue line के ऊपर रहेगा तो buy on dips रहेगा, right? इस बीच में अगर रहेगा, if it opens flat और इस बीच में ही है तो इस बीच में कोई ट्रेड्स लेना मत, यहाँ पे प्रीमियम्स ईट हो जाएंगे, आइदर बिलो दिस और आइदर अबव द रेसिस्टेंस दैट इज 23,487। यू गॉट इट? रेंज थोड़ा बड़ा है 200 पॉइंट्स का, बट वहाँ पे बहुत मारामारी होने के चांसेस ज़्यादा है। गैप डाउन होएगा, बेस्ट है, 23,279 के नीचे गैप डाउन आ गया तो एक 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग के लिए देखना और थोड़ा डायरेक्शन फाइंड आउट करना, दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट, दे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन बन जाएगा। उसके नीचे रेड आएगा तो नीचे की तरफ, लेट मी ड्रॉ सो थोड़ा आपको भी अंडरस्टैंड, अगर इसके नीचे के यहाँ पे रेड आया सो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, बट यहाँ पे आपको प्रीमियम थोड़ा कम आएगा, एंड इफ अगेन अ रेड इज फॉर्म्ड ओवर हियर
you can look out for this one. Got it? And if it opens flat, then blue करता हूँ इसको, इस बीच में ही रहेगा तो कोई ट्रेड्स लेना मत, प्रीमियम 8 हो जाएगा, राइट? एंड इफ इट ओपन्स गैप अप, और इधर ग्रीन आया, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड इफ द ग्रीन कंटिन्यूएशन में रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा. गॉट इट? बीच में कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, सो ग्रीन आने के बाद आप यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेल कर सकते हो, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल्स विच आर मार्क्ड एंड व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेवल्स इज. ठीक है? हैव अ ग्रेट प्रॉफिटेबल डे टुमारो. सी यू सून.